Yeah, I think we can go forward with just I think someone is logging in my system, so that may be the reason I'm getting logged out again and again. Okay. Okay, I can see if someone is already logging into my system. So just give me a minute. So I'll take on without this my account. I'll sign out instead. So yeah, taking on indexes at first. Hopefully, I'm live and audible to everyone. So yeah, I would take forward my session with the index overviews. So yesterday, I think there was a big news came up for VIX, which got shot up, and the VIX, which gave up a 20% downfall, and everyone was into a scenario where what happened on the scenarios. But I trust. Uh, I would say कि जो VIX है, if it decreases on the levels, and it is quite positive for the market sustainability as well as the volatility. So this is not a concern for the people who are looking for a market sustainability. It's just an option buyers who have got trapped and who have got drastically got hit in the VIX movement, which was 20% downside. So I would say कि that is not a concern. एक वॉलेटिलिटी एंड ये सब थोड़ा सा कम हो जाएगा एंड दैट विल बी एमिनेंट सो yeah, pcr is also neutral. I would say quantitatives are also neutral, and I the quantitatives are neutral, and the FIs have also sold puts yesterday, so that is quite positive in the quantitatives of Nifty as well as Bank Nifty. Also, it came up to positive scenarios. So technically also, if you can see कि एक अच्छा movement है निफ्टी में, slow है, steady है, but it is positive right now. And what I say, the technically, if the target and stop loss, if I'll mention over the same, so I'll see निफ्टी का जो सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट विल बी ट्रिपल टू डबल टू, विच विल बी द वेरी एमिनेंट, बहुत एमिनेंट है, एंड दैट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट. एंड आई वुड सजेस्ट कि यू हैव टू फॉलो दिस सपोर्ट फॉर योर बाय ऑन डिप सिनेरियोज. सो यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर है, एंड ऑन अ वीकली रेंज नीचे का सपोर्ट 22,100 के आसपास है, विच इज अ मंथली सपोर्ट, और इफ यू से और अ वाइडर रेंज ऑफ वीकली, थोड़ा वाइडर रेंज है. सो टॉकिंग अबाउट द रेसिस्टेंस, 22,500 का एक रेसिस्टेंस है, जो कि एक नोशनल फिगर भी रहता है, हाफ फिगर आउट ऑफ द होल फिगर. सो इट इज अ 22,500 विच इज अ लेवल वी आर लुकिंग कि एक बार वहां पर आके पॉज ले सकता है. अदरवाइज एक बार 22,500 भी अगर एक अच्छा गैप अप से निकालता है, तो देन इट कैन बी अनदर फॉलो ऑन कमिंग अपसाइड. सो टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, इफ आई से बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है नियर टू अबाउट 47 ट्रिपल सेवन के आसपास है. दैट इज ऑल द मैजिकल फिगर्स आई एम टॉकिंग अबाउट. सो ट्रिपल टू डबल टू एंड 47 ट्रिपल सेवन. So Bank Nifty has support of 47,777 and 47,500 on the weekly wider range. Same as Bank Nifty का जो resistance है 48,250. So why it is important to say the support and resistance? लोग सोच रहे होंगे कि मैं सबसे पहले ये support and resistance ही लेता हूँ. Why it is important? The importance is कि whenever there is a conviction, where is the option decoding या फिर option chain का decoding होता है, the writers are on the either sides. तो 22,250 का जो range में ऊपर का resistance बोल रहा हूँ, तो maximum open interest will be near to there on a weekly range. तो उस हिसाब से मैंने बोला है. सो इफ 48,250 इज क्रॉस्ड और ब्रीज्ड और इट इज नियर टू देयर, सो द राइटर्स, कॉल राइटर्स जो हैं वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे एंड दे हैव टू स्क्वायर ऑफ देयर पोजीशन. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 48,250 इज द लेवल. अगर वो क्रॉस करता है, तो द ऑप्शन सेलर्स, द कॉल सेलर्स हु हैव ट्रिगर्ड देयर सेलिंग ऑन दैट स्ट्राइक, सो दे विल बी ट्राइंग टू एग्जिट, एंड द एग्जिट जब भी मिलता है, तो देयर विल बी अ स्विफ्ट मूव. एक अच्छा अप मूव मिलता है आफ्टर ब्रीचिंग अ रेसिस्टेंस. सो 48,250 एक बार बैंक निफ्टी ब्रीच करता है,
तो यू कैन सी अ वेरी स्विफ्ट मूव कमिंग, एकदम तेजी से मूवमेंट आ सकता है फॉर अनदर 300 और 400 पॉइंट्स के आसपास ऊपर की साइड. सो समवन हु वांट्स टू टेक ऑन अ कन्विक्शन, दे कैन टेक कन्विक्शन 48,250 के ऊपर, एज वेल एज कि अगर सपोर्ट टूटता है 47,700 तो पुट राइटर्स विल बी अनकंफर्टेबल एंड दे विल बी स्क्वायरिंग ऑफ देयर पोजीशंस. सो दैट इज द कंसर्न व्हाट आई सेड, कि ये एक साइकोलॉजी रहता है which you should keep in your mind regarding taking a trades. So I would say कि निफ्टी में अगर ट्रेडिंग रेंज, इफ समवन वांट्स टू टेक अ ट्रेडिंग रेंज, आज का ट्रेडिंग रेंज, क्योंकि जो मैंने निफ्टी का लेवल्स बोला है दैट इज समथिंग थोड़ा वाइडर हो गया, 200 पॉइंट का हो गया. बट इफ समवन वांट्स टू ट्रेड ऑन अ शॉर्टर रेंज, बहुत शॉर्टर रेंज के आसपास ट्रेड करना है, तो 22,350 22,380 के आसपास एक अच्छा मेजर सपोर्ट लेके चल सकते हैं. एंड अबव दैट यू कैन टेक ऑन बाय ऑन डिप सिनेरियोज. सो दैट इज अवर पॉजिटिव सिनेरियोज अबव 40, सॉरी 22,380 के ऊपर यू कैन टेक ऑन बाय ऑन डिप्स और अच्छा बाय कर सकते हो कॉल्स. एज वेल एज द विक्स इज ऑन द लोएस्ट लेवल. सो लोएस्ट क्लोजिंग हुआ है लाइफ टाइम का, आई थिंक इट वाज बिलो 10 कल के दिन, नियरली इट वाज बिलो 10. सो इट वाज इन द मार्केट वेयर वी आर सीइंग अ सस्टेनेबिलिटी एंड वॉलेटाइल नहीं रहेगा. तो विक्स का बढ़ना इज लाइक मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ना, and there can be a fear or greed coming in the market, and people are going to book, there's a possibility of people they're coming to book their profits when the VIX is on higher side. Same as when the VIX is on down side, people are not looking for booking their profits, and they are relying on the market, they are relying on low volatility, and they're sustaining on the same levels. So ये एक एडवांटेज है विक्स का जो हम लोग को डिकोड करके देता है. सो आफ्टर कूलिंग डाउन द क्यूज ऑफ ग्लोबल्स, एक अच्छा डाउन साइड देखा गया विक्स में, क्योंकि विक्स हमारा ग्लोबल क्यूज जो इतना अनसर्टेन था, विच वॉज कीपिंग अप अनसर्टेनिटी इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑल्सो. सो वो थोड़ा सा ईज एंड पॉज एज वेल एज कंसोलिडेशन फेज में जाता हुआ दिख रहा है. ग्लोबल्स डॉलर इंडेक्स एज वेल एज क्रूड ऑयल, वो एक पॉज होता दिख रहा है और कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है. सो वी कैन रिलाई ऑन अवर मार्केट्स के, हो सकता है हम लोग भी सस्टेन कर जाए ऑन द सेम लेवल्स. So the people who are saying कि मार्केट इतना बढ़ गया और कितना बढ़ेगा, तो आई वुड से दिस इज नॉट द लेवल एंड दिस इज नॉट द व्हाट वी आर थिंकिंग ऑफ. सो 2024 का नारा हमारा 24,000 का है. चंदन सर ने भी ये बोला था रिलेटिंग 24,000, 2024 में 24,000. तो आई एम फॉलोइंग दैट ऑल्सो. सो आई थिंक सम द पीपल, आई सी अ क्वेरीज रिगार्डिंग कि हिंदी में लेने हैं. Okay, so I'll be mix of both Hindi and English. सो या अभी इंडेक्सेस हमारे सस्टेन कर रहे हैं अपर लेवल्स पे, और वी आर टेकिंग अ पॉजिटिव व्यूज एंड बाय ऑन डिप सिनेरियोज इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. सो वन कैन गो फॉर, अभी मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है, ऑप्शंस में मूवमेंट ही नहीं है, सो इतना ज्यादा कन्विक्शन ट्रेड नहीं दे सकते अभी राइट नाउ, क्योंकि कैंडल निफ्टी का जो 15 मिनट का कैंडल है दैट इज बीन स्टक, 15 एंड 5 मिनट का कैंडल उधर ही स्टक है विद इन अ रेंज ऑफ दिस फर्स्ट येलो कैंडल. एक बार अच्छा लेवल्स 22,430 के आसपास निकालता है, देन वी कैन सी कि एक अच्छा अपसाइड मिल सकता है फॉर अ सिंगल कैंडल ओनली. सो वी कैन सी कि इट्स अ कंसोलिडेशन फेज, सो इतना ज्यादा कन्विक्शन से नहीं दे सकते. So last for Nifty expiry also we have gone with consolidation, so we won't expect much in the same. And talking about the stocks, what we have taken on the stocks, yeah, I already took a query regarding the index views कि buy on dips करना है. Yes, buy on dips करना है, and we are taking is a positive scenario for Nifty and Bank Nifty. So Bank Nifty again can come to 50,000 mark in coming next month or next to next month, आ सकता है आराम से. So taking on the positive, अगर VIX हमारा यहीं पे रहता है, as well as if we see the market, global markets to support our stance, as well as CDSL, it's our technical pick of the day. You can take on CDSL with a view of 2250. So I'll take on CDSL on the screen. Yeah, CDSL, this is CDSL. एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग दिया है ऊपर से आज के दिन लेवल से, एज वेल एज मेरा येलो कैंडल भी बना है. बट फॉर इफ वी सी दिस इज अ 5 मिनट कैंडल, हम लोग 5 मिनट के कैंडल पे, 15 मिनट के कैंडल पे रिलाई करते हैं.
सो इफ वी सी मेरा जो येलो कैंडल बना है, इट इज कीपिंग अ पॉजिटिव सिनेरियो आफ्टर ग्रीन, वी कैन सी ओवर हियर. सो येलो के बाद ग्रीन बनता है तो इट इज अ पॉजिटिव सिनेरियोज एंड वी कैन गो फॉरवर्ड फॉर अ पॉजिटिव साइड. एंड उसके बाद जो येलो बन रहा है दैट विल बी डिसाइसिव मूव कि हम लोग को यहाँ से क्या लेवल लेना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस लेना चाहिए, क्या टारगेट लेना चाहिए. दैट विल बी फाइन. So as of now we have a target of 2250 and support of 2040. You can take on the support of 2040 and upside you can take 2250. That is our eminent role. uh, so taking on stocks, someone the people must have been waiting for a 1 year prospect stocks. तो एक हमारा फार्मा है विच आर वी आर फोकसिंग इन फार्मा एंड we are taking a leading stock. I'm sorry. So we are taking a leading stock in pharma sector, which is Sun Pharma. So we are taking 26% upside outlook in our fundamental overviews. So एक साल का टारगेट हम लोग का 26% के आसपास रह सकता है, नियर टू अबाउट 1900 लेवल्स. तो यू कैन सम इफ समवन वांट्स टू टेक फॉर अ ईयर, सो सन फार्मा कैन बी अ 26% गेनर. So same as Dalmia Bharat. Dalmia Bharat ka we have seen of positive fundamentals and we see price upside of 28%. जो हमारे फंडामेंटल आउटलुक में हमारा पॉजिटिविटी दैट हैव बीन शोन ओवर देयर. सो 2500 का ऊपर का टारगेट रहेगा. राइट नाउ इट इज नियर टू अबाउट 1900 1950 के लेवल्स पे है. 2500 का हमारा टारगेट रहेगा फॉर ईयर प्रोस्पेक्ट. सेम एज फॉर मैक्स हेल्थ केयर. मैक्स हेल्थ केयर आई साइड की फार्मास को ज्यादा अच्छा चल रहा है. फॉर चलने वाला भी है एज वेल एज टेक्निकल पॉजिटिविटी वी हैव सीन मैक्स हेल्थ केयर ऑल्सो. As well as fundamental positive is the main reason what we are giving a recommendation in a year view. So Max Healthcare is a positive. We are taking 25% outlook in positive. Our report over there. So next is the most recommended and the most reliable stock, which is Reliance. So we are taking positive scenario on Reliance as well, and we are taking 11 to 15% का आउटलुक हम लोग देख रहे हैं उसमें. एंड वी सी 32 3300 के लेवल्स इमीडिएटली भी मिल सकते हैं, बट वी आर गिविंग फॉर अ लॉन्गर टाइम. अगर एक बार 32 33 की लेवल्स एक बार निकालता है तो देन अगेन वी कैन सी 35 and 3700 के लेवल्स, और 4000 भी दूर नहीं है रिलायंस में. सो कीप इन माइंड इन रिलायंस. Yeah, so this is a stock yearly view what I gave right now. And सो ऑप्शन ट्रेड के लिए इफ यूल सी कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ना थोड़ा सा रुक रहा है. एंड दैट इज द रीजन आई एम जस्ट गिविंग अ पॉज. एंड निफ्टी में एक अच्छा ओवरव्यू बाय बना है, बट नॉट गेटिंग कन्विक्शन इन ऑप्शंस. कल विक्स बहुत ज्यादा थे, शॉर्ट अप डाउन किया था, शॉर्ट डाउन किया था. तो दैट मे बी द रीजन कि एक कन्विक्शन नहीं आ रहा है. बट इंस्टेड इफ समवन वांट्स टू ट्रेड इन अ बुल कॉल वे, that is my forte and I command over bull calls and strategies. Strategy से पैसा बनाना मेरा forte है. So if anyone wants to trade in strategy that is bull call, at the money का call buy करके एक ऊपर का strike you can sell. So that is one of the that is one of the eminent role, and we can take on profit booking in our strategies also, but it will be a risk. थोड़ा risk कम रहेगा as well as reward भी कम रहेगा. So that is in favor of the conservative traders or conservative swing traders. That will be beneficial for them. So as well as if someone wants to take a trade in यू कैन टेक इन 2200 का कॉल खरीद के जो 100 रुपए के आसपास चल रहा है. सो दे कैन सेल 22,500. सो दिस पेयर 22,400 का कॉल बाय करके 22,500 का सेल करना है. सो दिस विल बी अ गैप ऑफ 100 रुपीज ऑन द साइड. निफ्टी का 100 रुपए का गैप में हम लोग बाय सेल कर रहे हैं. सो 22,400 is on 100 and 22,500 is on 50. So maximum risk you are getting is only 50 rupees. 50 रुपए के आसपास का रिस्क है एंड 50 रुपए इज योर कॉस्ट. सो वेन एवर आई से कि आपको मैंने 50 रुपए की कॉस्ट में ये दिया था एंड द कॉस्ट हैज इंक्रीज टू 75 और 80, तो इसका मतलब समझिए कि 50 से जितना भी ऊपर मेरा कॉस्ट बढ़ता है तो वो मेरा प्रॉफिट है इन स्ट्रेटेजीज. सो अभी राइट नाउ 100 के आसपास चल रहा है एंड 46 के आसपास चल रहा है. यू कैन बाय फॉर 22 400 कॉल
and sell 22,500 call, both call. And the pair cost, Anuj, you can also mention the cost of this pair, that is near to 27 to 30,000. So the people who are retailers, they can also feel comfortable taking this bull call. ये नहीं लगे कि sir this is a option writing, this is not option writing, this is a strategy which has limited risk and limited return. So the money which is involved in this strategy, that is also very less. So 27 to 30,000 के आसपास का मार्जिन लगेगा, दैट विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल द रिटेलर्स विच टू टेक अ ट्रेड, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर एक कन्विक्शन ऑप्शन बाय लेना ना मुश्किल काम है, क्योंकि ऑप्शंस ना बहुत कंसोलिडेट कर रहे हैं, कल भी देखा होगा आपने, बहुत कंसोलिडेट कर रहे हैं। एंड विक्स डाउन की वजह से ना, तो ऑप्शंस टेंड टू स्टे ऑन देयर लेवल्स। आपको पता होगा कि व्हेनेवर देयर इज अ बिग स्पाइक, तो ऑप्शंस में थोड़ा सा स्पाइक आता है, इंडेक्स मूव करे ना करे। सपोज इंडेक्स 22,000 पे चल रहा है एंड विक्स इज ऑन 10। अगर विक्स 12 भी हो गया ना, ये 11 हो गया या 12 हो गया, इंडेक्स अगर 22,000 पे भी रहेगा, तो कॉल एंड पुट, या फिर पुट के प्रीमियम ज्यादा बढ़ जाएंगे, कॉल के प्रीमियम्स कम बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ जाएंगे, दोनों बढ़ जाएंगे। सो दैट इज अ सिनेरियोज व्हाट विक्स हैज अ एमिनेंट रोल इन ऑप्शन प्रीमियम्स। एक एंड द IVs of the options on the option chain will also increase, seeking a view on VIX. So I think we have a session on Friday. So I'll be covering some of the points for the understanding on the technical part and the quantitative part. लोगों को समझ में आना चाहिए. So I'll be posting some live sessions over Friday. Uh, so this is my trade right now. So we have to wait. That is not possible right now to make a conviction trade immediately, just because it's a pause and एक ट्रेड डालने के बाद भी थोड़ा टाइम रुकना पड़ता है, क्योंकि इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं है मार्केट में। सो दैट इज द रीजन आई एम गिविंग अ बुल कॉल टू बी सेफर फॉर यू, आपका पैसा बने और आपका पैसा सेफ भी रहे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। सो टेकिंग ऑन द, आई यूज टू टेक इंडेक्सेस विच आर पॉजिटिव, हमेशा मैं इंडेक्स लेता हूँ कि विच आर पॉजिटिव आउटलुक फॉर मंथ, क्वार्टर, एज वेल एज ईयर व्यूज। सो इफ समवन वांट्स टू टेक, मैं बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ, रियलिटी इज अ सेक्टर विच आई एम टेकिंग फॉर लास्ट मंथ एंड पॉजिटिव सिनेरियोज क्रिएट कर रहा है रियलिटी। एंड वहां से अच्छा खासा भी निकल गया है, करीबन 7-8% के आसपास का रियलिटी गेन्स भी मिला है आई वुड से। तो स्टिल यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर अ बाय इन रियलिटी। रियलिटी स्टॉक अगर किसी को लेना है, तो यू कैन टेक ऑन रियलिटी स्टॉक्स, so that will be favorable for the scenarios. So stocks which you should focus in, microcap developers, जो मैंने आपको 1200 के आसपास बोला था लेवल्स पे, 1245-50 चल रहे हैं, एंड वी आर टेकिंग अ पॉजिटिव व्यूज। सो लास्ट टाइम मैंने फिनिक्स मिल्स भी बोला था, ओबराय रियलिटी भी बोला था, एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज भी बोला था। ऑल स्टॉक्स ऑन द लेवल्स which I gave, they are in profit right now. And I see, I think Godrej Properties is on the same levels and it's still in profit, but it's on the same levels. But we are positive in all other stocks. So taking on stock things on metals. So metals भी एक अच्छा पॉजिटिव है, आज 1% के आसपास निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी मेटल्स ऊपर है। सो आई वुड से कि एक अच्छा कन्विक्शन है ऑन द मेटल साइड ऑल्सो। आई एम टेकिंग अ पॉजिटिव सिनेरियोज ऑन JSW एनर्जी। I think NMDC will be the strongest counter. Forget JSW Energy at first. So let's take a leading stock, which is NMDC. NMDC is one of the strongest, and the technical point of view, it's positive on the same. So आज भी 2% ऊपर है, it's 239-240 के आसपास चल रहा है। You can take on the target of nearly 255-60 के आसपास ले सकते हैं। So this will be the thing, and I'll be taking on the queries for stocks. I'll be ready to take on the queries of people who are looking for stocks. So you're taken Hindustan Motors. सो हिंदुस्तान मोटर्स से ज्यादा अच्छा तो आपको बजाज ऑटो था। इफ यू हैव टेकन हिंदुस्तान मोटर्स, देन सॉरी, टुक ऑन द विच लेवल्स?
24. I think I can see in my indicator that is sell exit and buy scenarios has been created in the same. But I will say कि if already profit थोड़ा बहुत हो रहा है तो you can book your profit somewhat, थोड़ा बहुत 20-30% book your profits कर सकते हैं, and rest you can look forward, but technically positive here, and autos are on fire for a year. I already said in my last multiple sessions कि autos are in positive and we are taking a positive views on auto. So this is also one of the counter we are taking positive scenarios. Adani Ports. So yeah, Adani Ports has created some sell and buy exit or sell scenarios, and आई वुड से ऑलरेडी आप लोग जो बोल रहे हो कि ऑलरेडी सेलिंग आ गया है, वो मेरा ऑलरेडी 23 तारीख की कैंडल में ही आ गया था. सो दिस इज व्हाट आई लीड फ्रॉम द इंडस्ट्री, एंड आई से कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहने वाला है. आई वोंट से कि इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा कन्विक्शन है ऑन द अपसाइड. सो आई वोंट से कि इतना ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा. सो टेकिंग ऑन द सपोर्ट ऑफ नियरली 1310 या 1300 के लेवल्स आप देख सकते हो. आई एम सॉरी, 1310 के आसपास आप लेवल्स देख सकते हो, एंड टेकिंग फॉरवर्ड फॉर द टारगेट्स ऑफ नियरली दैट विल बी चैलेंजिंग टारगेट, बट 1344 के आसपास का एक टारगेट है 1344 का. दैट विल बी आप देख सकते हैं कि वहां पर आए तो एक बार if it sustains over there you can hold, and if it is not sustaining above the levels you can book your profits over there. So yeah, Tata Steel Metals has been positive. I already told you guys a lot of time over this same. So taking on views of Tata Steel, it is positive on the scenarios of monthly outlook. आज भी मेरा देखिएगा, इफ यू कैन सी एक बाय सिनेरियो क्रिएट किया है 3:30 साढ़े 9 बजे मॉर्निंग इटसेल्फ. सो एक अच्छा येलो कैंडल बना के येलो ग्रीन फॉलो ऑन दिया है, एंड आई एम टेकिंग अ इंट्राडे ट्रेड. मैं इंट्राडे ट्रेड ले सकता हूँ व्हेन आई एम ट्रैकिंग 15 मिनट्स एंड getting a conviction over the yellow. So this is positive for today, so you can take it for trading range, and upside you can see near to about कल का highs 160 164, but ऊपर थोड़ा सा resistance है which will be a challenging task. सो 164 165 एक बार निकाल दे तो उसके बाद एक अच्छा वॉल्यूम मिल सकता है, बट इट विल बी अ चैलेंजिंग टास्क फॉर 22 का अप्रैल का जो चार्ट है, दैट विल बी अ रिलेटिव हाइज. सो टेकिंग ऑन सपोर्ट, कल के लोज पे सपोर्ट लीजिएगा 130 के आसपास. दैट विल बी द पॉजिटिव थिंग. सो एनबीसीसी, इफ आई सी एनबीसीसी सर परफेक्टली यू कैन टेक ऑन, एंड आपको लेवल्स पे लेना है तो आप लेवल्स पे ले भी सकते हो एज वेल एज होल्ड भी कर सकते हो. सो टेकिंग ऑन आई ऑलरेडी काफी ज्यादा क्वेरी वही आता है जो मेरे फेवरेट इंडेक्स में से है. सो आईआरबी ऑलरेडी आई टोल्ड थोड़ा सा रियलिटी और कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर दीज आर ऑल पॉजिटिव. सो काफी टाइम से मैं मंथली बोलता आ रहा हूँ रियलिटी रियलिटी रियलिटी. So this is one of the stock you can take on the positive side, and it's positive. You can take even from here, as well as if you are holding, you can hold more for another coming target for nearly 72 and 74. सर वोडाफोन आइडिया का कोई मार्केट में इम्पैक्ट ही नहीं है. सो इफ आई से कि कल 20% था कुछ, कितना गया था कल? इट वाज ऑन सर्किट राइट. 1455 के आसपास था, बट टुडे इट ओपन गैप डाउन. सर मार्केट में ये बहुत छोटा स्क्रिप्ट है जिसकी वजह से कोई इम्पैक्ट आना चाहिए मार्केट में. सो देयर आर लॉट ऑफ global cues, global uncertainties, interest rates, and bond yields. These are metals and the metal prices, and these are the major roles which play in the market to make a decision over the trend. But Vodafone is certainly not a reason for market to go for a selling side. But taking on the positive side, someone is holding Vodafone, then they can hold. Chalega.
So that is not in our coverage, but I will certainly say, what is the script, sorry? Okay. So that is certainly not in our coverage, I would say. But technically मैं comment कर सकता हूँ कि that is positive in technical analysis, and we see the price action के हिसाब से, if I'll see the targets, तो price action के हिसाब से targets might go to 525, 525 के आसपास ले सकता है, एंड टेकिंग 506 का एक बार रेसिस्टेंस क्रिएट किया है, अगर ये निकाल देता है तो 525 विल बी नियर, एंड 550 भी देखने को मिल सकता है, बट इट नीड्स टू सस्टेन अबव 472। JSW Infra, ओके। So JSW Infra, if I'll see कि एक अच्छा पॉजिटिव है and it's in a buy scenarios, you can take on for a buy scenarios as well. So taking upside on the target, you can focus on 256, 257. एक बार वो निकाल देता है तो then again new highs can be seen to 267, 267 और 870 के आसपास का देख सकते हैं. So there is 10% upside, and the supporting, if you want to take on the support, 242, मतलब 8 रुपए 4% के आसपास सपोर्ट ले सकते हैं, and 10% is the target upside. So NGC, if you see, there is a quite consolidation. So इतना ज़्यादा अभी consolidation phase से नहीं निकला है, unless until 291 या 290s एक बार नहीं निकाल देते हैं on a major range. But आज का जो trading range बोलता हूँ, 281 एक बार निकाल देना, put a alarm, put a notification, 281 अगर निकाल दे तो you can go for a buy. एंड उसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया 281 के ऊपर, मतलब ब्रीच नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर सस्टेन कर गया, तो यू कैन सी अगेन 305, 3010 एक अच्छा बुलिश मैं स्टांस बोल रहा हूँ एनजीसी में, बट इट्स अ कंसोलिडेशन फेज राइट नाउ. जब तक कंसोलिडेशन फेज से निकल के एक्यूमुलेशन फेज, देन ब्रेकआउट जोन, देन ट्रेंड एक बार तोड़ के ऊपर नहीं निकलता, देन अगेन फॉलो ऑन कैन बी सीन, तब तक वो कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा. सो if someone wants to be an investor, this is a good stock to invest. So if someone is a trader, so that's not for you. Avoid as of now. So yeah, thank you everyone. That's it from my side. Yeah. So I see a lot of queries coming कि Suzlon लेना है क्या? I see a YouTube queries coming for Suzlon. So Suzlon, I think you should avoid right now. The major move in Suzlon is already been dissolved, and जो what we look forward कि Suzlon का uh, what we say is कि ऑलरेडी मूव आ चुका है, एंड वी डोंट फील कि इतना ज्यादा मिड कैप जब तक नहीं चलते तो अनदर मिड कैप रैली कैन बी कमिंग फॉर 30%. जब तक 30% मिड कैप का रैली नहीं आएगा तब तक सुजलॉन 10-15% नहीं चलेगा. सो इफ समवन वांट्स टू बुक प्रॉफिट एंड इट्स इन प्रॉफिट, देन दे कैन बुक योर प्रॉफिट्स एज वेल इन, आप अपना बुक प्रॉफिट कर सकते हो इन सुजलॉन. सर बैंक निफ्टी में आई सी क्वेरी कमिंग फ्रॉम यूट्यूब. बैंक निफ्टी में ट्रेड किसी को चाहिए, सो द बैंक निफ्टी ट्रेड अगर आपको लेना है तो आज का जो लेवल्स है नियरली अबाउट 48,100, 48,000 का जो कॉल्स है विच इज इन द मनी. तो 48,100 का जो कॉल चल रहा है 125 के आसपास चल रहा है, आप ये भी रिलाई कर सकते हो उस पर, एंड यू कैन टेक आउट द टारगेट्स ऑफ नियरली 160, 160 170 के आसपास टारगेट दे सकते हो, एंड टेकिंग ऑन द सपोर्ट 90, 95 विल बी द सपोर्ट ऑन द डाउन साइड.
So this can be a bank nifty trade for you guys. But market slow है, थोड़ा सा slow move करेगा, and you can make up in a slow move. बात बात करते करते आई थिंक एक स्विफ्ट मूव दिया है बैंक निफ्टी. मैंने बोला अभी जस्ट स्लो मूव दे रहा है, बट टुडे दिस द कैंडल विच वी हैव वर्कड अपॉन, अभी जो लास्ट निफ्टी का जो बैंक निफ्टी का जो कैंडल पे मैंने अभी ट्रेड दिया था, इट पॉप्ड आउट एंड एक अच्छा मतलब एक अच्छा कैंडल दे दिया है. दिस कैंडल विल बी व्हाट आई इनिशिएटेड अ ट्रेड, एंड अपने रेंज से एंड कंफर्ट जोन से बाहर निकला है, तो आई गेव अ ट्रेड ऑन 125 and the option swiftly moved to 135 and again came up to 128 and 30 levels. So still you can make up in buy on dip scenarios. एक buy on dips बना सकते हैं. You can take your views in bank nifty as a buy on dip scenarios. आप कर सकते हो buy on dips. So that's it from my side. I took on stocks, I took on index views, I took on ईयरली व्यू स्टॉक्स एज वेल एज मैंने ट्रेड का भी कोशिश किया. मार्केट में मूवमेंट नहीं था, बट मैंने ट्रेड देने का भी कोशिश किया. एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. आई log off as of now. If there is any query to cover, you can directly come up with आप क्वेरी डाल सकते हो ऑन आवर platforms, so we'll be reverting over the same. As well as you can put your queries on YouTube chat as well, and we will be taking your queries on live basis. We'll be taking two sessions in the day, 9:30 and 2:30. So you can log on with your queries over the same. So thank you everyone. That's it from my side.